So I'm back after a long break. Um, the break was refreshing, but I think I need to get on track. It's day 43. I'm continuing my grind. This time even stronger. So, for context, what happened in past few days was I participated in one more Div 3 and my rating jumped to 1160. That is great, just 40 points below pupil. So this month I aim to reach specialist at the end of February, which is totally possible. So I have ramped up my efforts for every day. Now I will be solving 3 and more with strict time, uh, time bound problem solving. Um, 30 minutes of thinking and 15 minutes of coding and debugging if I need to see the hints. That will be a good call and save myself from wasting time. Today I have decided on 4 of problems that are commonly seen in Div 2C rated problems, which I definitely want to solve in upcoming exams. So contests. So I would be solving the C problems, which vary from 1200 to 1600. And I will make the foundation strong and hope this practice for the upcoming Div 2, that is around 5th or 7th, a good solve, and I can solve A, B, C fast there. Okay, so without wasting any more time, let's get started. I have started the timer of 30 minutes. You can see timer has started. Okay, but I think I don't have my notebook ready. Just a minute. Wait, I'm back. Let's solve this in under 30 minutes. Wait. Okay, recently. Okay, let's skip this and focus on the constraints, and that will help me solve the problem faster. N is 2 into 10 to the power 5, basically binary search and something related to it. N is A is a very big number, 10 to the power 12, which is massive. Okay, where A is the strength of the ith hero, so these are the strength. Okay, the third line contains a single integer m, the number of dragons. Okay, we have the dragons there, the number of dragons, single integer, the number of dragons, dragon count. Great. The next m lines will have xi and yi. Okay, defense and attack power of the ith dragon. So every dragon has a defense power and attack power. This is defense and this is attack. First one, x is defense, y is, and these numbers are also very massive. X is 10 to the power 12 and y is 10 to the power 18. Great, these are crazy numbers. Okay, so we have m number of these, so input is quite interesting. So
print m lines. I need to print m lines containing two print m lines ith of which contains the single integer minimum number of coins that should be spent to defeat the ith dragon. So min coins needed to spend on ith dragon. Okay, great. Okay, now what does this coin mean? Let's figure out. Recently, Petra learned about a new game, Slay the Dragon, and the name suggests that the player will have to fight with the dragons to defeat a dragon. Okay, we have to kill it and defend your castle. Kill dragons, defend castle. To do this, the player has a squad of n heroes. Okay, we have n heroes with their strengths. The strength of the ith hero is equal to AI. Great. So this is the structure. According to the rules of the game, exactly one hero should go kill a dragon. All others will defend the castle. One will attack, others will defend. If the dragon's defense is equal to X, then you have to send heroes with a strength that is at least X or more to kill it. Okay, so ऐसा एक हीरो भेजना है जिसका strength is more than or equal to the defense. Okay, X. तो ड्रैगन का जो एक्स फैक्टर है दैट शुड बी नो हीरोज का जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू ड्रैगन का एक्स फैक्टर टू किल इट. ओके, then you have to send a hero with a strength that is X to kill it. Okay, the dragon's attack power is Y, then the strength of the heroes defending the castle should be at least Y. So I think the sum of the heroes that are remaining should be at least Y. Okay, ठीक है. The player can increase the strength of any hero by 1 for 1 gold coin. This operation can be done any number of times. किसी भी हीरो का स्ट्रेंथ एक कॉइन से किया जा सकता है, एक कॉइन से एक बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, the operation can be done any number of times. Great. Okay, there are m dragons in the game. The ith of them has defense and that equal to something. Okay, now okay, we have 6 minutes in. Great. So okay, एवरी ड्रैगन के लिए ये टास्क इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जाता है. सो इफ n इज इतना n log n, तो n चलो मान लेते हैं कि हर बार n रीड करना पड़ सकता है. सो फॉर एवरी पावर समथिंग समथिंग log n लगना चाहिए. सो n log n में ये सॉल्व होना चाहिए, राइट? ठीक है, ग्रेट. n log n में अगर ये सॉल्व होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर ऑफर्ड. नाउ एक एग्जांपल देखते हैं एंड दैट विल हेल्प मी क्लियर. Number of heroes, I have 4 heroes, right? 3, 6,
2 3 these are my heroes. ओके 4 लेंथ ऑफ द हीरोज है. फिर m दिया जाता है, दैट इज द काउंट ऑफ ड्रैगन्स. ओके 5 फिर एक्स वाई दिया जाएगा. जब डिफेंस है 3, अटैक है 12, डिफेंस है 7, अटैक है 9, डिफेंस है 4, अटैक है 14, डिफेंस है 1, अटैक है 10, डिफेंस है 8, अटैक है 7. ओके नाउ आई हैव टू प्रिंट m लाइन्स. ठीक है फॉर द फर्स्ट अटैक ड्रैगन 3 and 12, I know it's 3. मतलब to kill this dragon I have to send a hero that is at least 3. So the total defense of all heroes is sum of the heroes total array 6 plus 3, 6 is 12, 13, 14. 14 is the defense. 14 is the defense. तो coins कितना spend करना पड़ेगा. So पहला हीरो अगर हम 3 सेंड करते हैं, 3 सेंड करते हैं तो 3 can kill the dragon, but my total defense will be reduced to 11. So to defend it I need 1 coin to increase my strength. So first 12 13 will give me 1. 7 and 9 I have. So I have I need a hero that is worth 7, but the maximum I got is 6. So 6 लेते हैं और total में से 6 minus करते हैं तो I have 8 to defend, for which I need 1 more coin. डिफेंस में 9 चाहिए and 6 है, 7 मेरे को अटैक चाहिए तो 1 more coin. So 2 coins for the second one. Third one I have 4 and 14. ठीक है जिसमें मेरे को 4 चाहिए and I think I want anything that is equal to 4 or at least 4. So 6 लेंगे क्योंकि 4 से बड़ा है तो 6 लेते हैं. तो डिफेंस में मेरे पास 8 बचता है और अटैक इज गुड. अटैक इज डन बट डिफेंस में 14 चाहिए एंड आई हैव 8. सो 6 कॉइन्स लगेंगे यहाँ पे. 6 कॉइन्स थर्ड वाले में 6 कॉइन्स. फोर्थ वाले में 1 and 10 आई नीड्स टू अटैक इट विथ 1. सो 2 लेते हैं, वो अटैक कर देगा एंड 14 में से 2 निकालते हैं तो 12 होता है विच इज़ डन. 0 कॉइन्स लगेगा एंड 8 7. तो मुझे 8 चाहिए अटैक के लिए और डिफेंस के लिए 7 चाहिए. तो 8 इज़ नॉट पॉसिबल, 6 इज़ पॉसिबल. 6 लेते हैं प्लस 2 कॉइन्स लगेंगे एंड 8 बचता है एंड 8 7. सो 2 कॉइन्स ही लगेंगे. सो देखते हैं 1 2 4 है, 0 है, 2 है. ओके ये 6 लिख दिया है, 4 होना चाहिए क्योंकि थर्ड लास्ट दैट इज 4 14. 4 and 14 ठीक है. तो 3 6 2 ये है. तो 6 नहीं लेके आई कैन सिलेक्ट समथिंग दैट इज ऑफ कॉस्ट which is closer to 4. That is 3 is closer to 4, right? Without wastage. But मान लेते हैं 6 हटा के भी, 6 भी हटा देते हैं स्टिल मेरा सम मेंटेन रहता. तो so basically we are trying to find the heroes which is great. समझ गए? सॉर्ट करना है this thing 3 2 3 3 6 and then we are iterating on the heroes. ठीक है कि देखते हैं ये हीरो लेंगे तो क्या कितना कॉइन्स लगता है एंड ज़्यादा कॉइन्स लगता है तो we will try to we cannot iterate on all the heroes. So जैसे हम लोग 3 पे 3 वाला हीरो भेजते हैं, पॉसिबल है या नहीं. ठीक है
We cannot send an arbitrary power hero, so जो पॉसिबल है वही भेजा जा सकता है. ओके, वी कैन सेंड ए 3 जिसके लिए एक पेनल्टी लगेगा, बट 14 माइनस 3 इज 11 एंड व्हाट वी नीडेड वाज 10. इधर तो कुछ नहीं लगेगा, बट 4 करने के लिए 14 है, 11 है, इधर 3 कॉइन्स और उधर 1 कॉइन, टोटल 4 कॉइन्स लगेगा. If the number is large, then we will definitely need more coins in this section. But less coin in this section. ये 6 लिए थे फॉर एग्जाम्पल. सो 6 में क्या हो रहा है कि एक्सेस मिल रहा है, राइट. 2 ज़्यादा मिल रहा है जो कि वेस्ट हो जा रहा पावर. उसको डिफेंस के लिए रख देते हैं. What we can do is कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शंस नहीं होगा ना. We need to select an optimal hero to go out, right, and defend. So अगर हम लोग 6 यूज़ करते हैं, अगर 6 यूज़ करते हैं तो 2 वेस्ट हो जा रहा है. दो वेस्ट हो जा रहा, तो इतना पावर, उससे लेस पावर वाला कुछ भेजते हैं, है ना. इन दिस जैसे कि 3 पे रहेगा तो आई विल गेट ए सम ऑफ 4. अब हमको क्या करना है कि शुड आई ट्राई टू फाइंड इवन स्मॉलर समथिंग. 2 यूज़ करते हैं, 2 में 2 और लगेगा एंड 14 है, -2 is 12, तो और 2 लगेगा, 4 ही होगा. स्मॉलर हीरोज़ को भेजेंगे वो होगा. जैसे मान लेते हैं कि 6 ही लेते और वो था 6, ठीक है, तो टोटल 14 था, उसमें 6 लिए तो 8 बचा. इट्स जस्टिफाइड, ठीक है. तो say it was 6 and 6 and the sum was 14. So if I take out 6 from it, if I take out 6 from it, we need to do binary search and we need to find something exactly smaller, okay, smaller or equal to something. We don't find something larger, right? लार्जर खोज सकते हैं, डिपेंड्स. तो 6 है तो 8 बचता है, ये वाला 6 हो गया, ये भी, तो 0 कॉइन्स लगेगा. बट से इफ वी हैड समथिंग लाइक 3, 7 and 2, 3, that is 10 and 15. 15 has sum and we wanted something that is 6 और सम चाहिए मुझे 6. तो अगर had I chosen 3, ठीक है, अगर 3 चूज़ करते हैं तो 3 कॉइन्स लगता एंड यहाँ वेस्टेज हो रहा है.
अगर 3 चूज़ करते तो यहाँ 12 होता फास्ट, बट यहाँ दूसरे साइड पे वेस्टेज हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कॉइन्स लग रहा है उसके वेस्टेज की वजह से। वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए आई नीड समथिंग that takes out more, right? So a larger number. Wastage in defense. Move ahead. More strength. Say if we have a wastage in this thing, or we can do is 9 is the required 9 is the required defense, 7 is the required this thing minimum, right? So 9 plus 7 is 16. Our total sum is what? 14. So whatever we do, this is not that simple because we cannot take out from things. This is not justified. More strength. अच्छा, मान लेते 1 है, 14 चाहिए. I have chosen 3. Then 3 here gives me what? Wastage, right? And 3 here means wastage in the attack part. And 15 minus 3 is 12, which is need to gain points. So I need to move the smaller. Wastage in attack, smaller strength. Okay, I've got this, the gist of it. Let's write the pseudocode. तो सबसे पहले तो sort करना होगा. Sort vector begin and vector end. Okay, sorted. Then I do a binary search on indexes. Okay, so low will be 0 and high will be n minus 1, while low is less than equal to high. We do this, we find mid equals to low plus high by 2. Now what we do is, if वेस्टेज किस में हो रहा है वो निकालना होगा. तो हाउ डू वी नो द वेस्टेज? सम निकाल लेंगे, ठीक है. सम चाहिए होगा विथ इनपुट, उसके बाद टोटल सम. वेस्टेज कैसे निकालेंगे? तो मिड जो है, मिड एक इंडेक्स देगा, तो इंट वैल इक्वल्स टू वी मिड, ये एक वैल्यू देगा. अब find wastage, int attack equals to attack to defense. अच्छा, तो ये होगा while लूप के अंदर, while m माइनस माइनस, ओके, int x sin x और y भी दोनों ले रहे हैं और x y से कंपेयर कर रहे हैं. तो आई हैव टू सेंड ए हीरो दैट इज मोर देन पहले तो मेरे को खोजना होगा कि इफ x जो कि अटैक है इज, मतलब ड्रैगन का अटैक है, इज स्मॉलर देन, इज लार्जर देन
whatever strength I have chosen, I need a बड़ा अटैक चाहिए मुझे. Strength low equals to mid plus 1. ठीक है. Else. ठीक है. मतलब सेटिस्फाइड नहीं है. ठीक है. अब खोज लिए. अब होगा खोजना. So I found an attack. Now I need to check. Else के अंदर भी if else होगा. Else में ये if else होगा कि if else if में मतलब attack is strong enough. So wastage. Int attack wastage. Int defense wastage. So देखते हैं. Attack wastage will be my current value minus x. ठीक है. नेगेटिव होना चाहिए. सेम है तो दैट्स गुड. और dw will be डिफेंस वेस्टेज होगा. ये होगा मेरा डिफेंस और y है इसका डिफेंस. तो आई हैव फाउंड द डिफरेंस. अब इसमें क्या करना है. coins equals to min of coins comma कितना मोर चाहिए. तो अच्छा ये गलत कर रहे. वही तो. अगर मेरा करंट जो वैल्यू है इफ x इज मोर देन करंट वैल्यू मतलब ड्रैगन का अटैक इज मोर देन माय करंट अटैकर देन माय करंट अटैकर्स coins plus equals to coins plus equals to int attack coins equals to x minus वैल्यू. इतना और कॉइन लगेगा. अच्छा. int डिफेंस कॉइन इक्वल्स टू देखना होगा कि जो टोटल सम है ठीक है और y है टोटल सम माइनस वैल y माइनस दिस. तो मान लो ड्रैगन का 18 है एंड आई हैव 16. ठीक है. डिफरेंस अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स कि मेरा जो टारगेट वैल्यू है इज स्टिल लेस देन दैट. बट मान लेते हैं टारगेट वैल्यू इज मोर देन y. देन इफ इट्स पॉजिटिव. अगर नेगेटिव है मे बी 19 तो मतलब दिस फुलफिल्स राइट. नेगेटिव है तो 0 लगेगा नहीं तो फिर y माइनस टी सम माइनस वैल होगा. ये इतना कॉइन्स लगेगा. अच्छा. कॉइन्स इक्वल्स टू min ऑफ कॉइन्स कॉमा AC plus DC. okay. now I need to make some movements कि मेरा किस में वेस्टेज हो रहा है. वेस्टेज किस में हो रहा है मतलब अगर AC में कॉइन्स लग रहा है ये देख रहे थे कि वेस्टेज इन डिफेंस दैट मीन्स
रिक्वायर्ड है 1, दैट इज x एंड आई एम गिविंग y। जो भी पॉजिटिव है, AC is more than 0, ठीक है। if AC is more than 0, दोनों more than 0 हो सकता है। more than 0 तो smaller, high equals to mid minus 1, अगर DC is more than 0, can AC and DC be both more than 0? more than 0 का मतलब क्या है कि पॉजिटिव, दैट मीन्स कि हो जा रहा है। AC and DC is both more than 0 मतलब सक्सेसफुल है, राइट। लेट्स सी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर डिफेंस कॉइन्स लेते हैं 3723 जो है, टोटल सम इज 15 एंड आई वांट समथिंग 1 and 14। तो जब 3 लेते हैं तो oh my god, 30 minutes is over. I think I should take more, just 10 minutes to solve this. Okay, 30 मिनट हो चुका है। So one needed था x but I gave it 3, so AC is not more than 0, यहाँ वेस्टेज नहीं हो रहा है। थ्री हटा रहे 15 में से 12 हो रहा है, रिक्वायर्ड है 6। required is 6 and I have 12, right? तो नेगेटिव है, मोर देन 0 नहीं, इक्वल टू 0। इसी मोर देन 0 तब होगा ना। इसी विल बी मोर देन 0। इसी तो हमेशा मोर देन 0 ही होगा। DC अगर 0 हो जाता है दैट मीन्स कि DC में वेस्टेज हो रहा है ना, कि दिस इज बिग। तो if DC equals to 0, मतलब DC में वेस्टेज हो रहा है। ये अगर सेमीकोलन ही लगा दे, DC इज नेगेटिव, तो DC नेगेटिव है, अगर DC में वेस्टेज हो रहा है। वेस्टेज हो रहा है मतलब अगर डिफेंस में वेस्टेज हो रहा है तो आई नीड अ बिग नंबर, तो लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1। और हाउ डू वी नो इसमें वेस्टेज हो रहा है, इसमें वेस्टेज नहीं होगा।
और इसमें वेस्टेज नहीं हो रहा है तो मान लेते 0 है। दिस इज अ गुड नंबर। क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कम करने की कोशिश कर सकते हैं ना। एल्स इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। बट अगर मान ले DC पॉजिटिव हो जाता है, डिफेंस DC 0 हो सके या समथिंग हो जाएगा, बट DC अगर मान लेते पॉजिटिव हो गया, मतलब कि ये 12 और ये 6 है, दैट मीन्स कि what we can do is we can try to increase this value, right? ताकि कॉइन और कम लगे। यहाँ कॉइन लग रहा है ना, इसमें पॉजिटिव हो तो कॉइन नहीं लगेगा, 0 हो तो कॉइन नहीं लगेगा, बट नेगेटिव हो, नहीं नेगेटिव हो तो नो कॉइन्स, 0 हो तो नो कॉइन्स, पॉजिटिव हो तो कॉइन्स लगेगा। ये अगर पॉजिटिव है तो कॉइन लग रहा है, कॉइन्स लग रहा है, तो आई वुड लाइक टू रिड्यूस द कॉइन्स, राइट। DC में कॉइन रिड्यूस करने के लिए पॉजिटिव है, मतलब DC is needing coins. Our DC is needing coins, then what we need to do? If DC is needing coins, मतलब डिफेंस छोटा नंबर पे जाना होगा, ठीक है। एल्स में आई थिंक दिस इज इनफ। एल्स क्या होगा कि या तो वैल बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो एंड AC इक्वल्स टू सेम होगा कि x माइनस वैल DC इक्वल्स टू y माइनस t सम माइनस वैल। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो वैल है कैन बी इक्वल टू x, तो AC 0 हो सकता है या तो AC नेगेटिव हो सकता है। AC नेगेटिव मतलब कि जो गिवन वैल्यू है इज मोर देन रिक्वायर्ड। AC नेगेटिव हुआ और 0 हुआ तो 0 कॉइन्स। यहाँ पर DC में t सम माइनस वैल कर देंगे, नेगेटिव हुआ 0 कॉइन्स लगेगा, इज लेस देन इक्वल टू 0 तो 0 कर देते हैं, नहीं तो x माइनस वैल करते हैं, ठीक है। ठीक है, दिस इज डन। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज चेक कि अगर AC इज 0 और समथिंग, तो यहाँ वेस्टेज नहीं हो रहा, कोई पॉइंट्स नहीं लग रहा। AC का नेगेटिव है, वेस्टेज हो रहा है। AC इज लेस देन 0, तो AC में अगर वेस्टेज हो रहा है,
अटैक में, तो स्मॉलर नंबर खोजो। देखते हैं चलता है कि नहीं। लेट्स ट्राई। No, thus we need an n, then we read the vector, then we read m. Okay, we need the sum. Okay, we are reading m, then we do a while loop, where inside which we'll do the binary search of checking if something is correct or not. Then first we need to sort the okay. Now in the while loop, int low is 0 and high is n minus 1. ठीक है, ठीक है। int val equals to v mid, ये एक वैल्यू देगा if x comma y seen okay if x is more than val int ac equals to x minus val int dc, that is defense points, equals to y minus total sum minus val. If it's negative, then reset to 0, else whatever the value is, give it to me. Negative means no coins needed. Coins equals to min of this coins comma AC plus DC. Okay, need to initialize the global coins for every m, will get me the coins count. This will be printed, coin save हो चुका है, and movement if
this thing. If this thing is less than equal to 0, then low equals to mid plus 1, else I equals to mid minus 1, else int AC equals to x minus val. If less than 0, it will be 0, else x minus val in DC equals to same y minus t sum minus val is less than 0. That means reset to 0, else x minus val y minus t sum minus val. Okay, coins equals to min of coins comma AC plus DC. If AC is equals to mid minus 1, else equals to mid plus 1. This while loop will end and we need to print will it work. देखते हैं टेस्ट केस एक ही होगा आई बिलीव. So there won't be any test case. Let me see how much time has gone. Around 16 minutes, 46. On the 46 minutes mark, and I think I have done the blunder. 1402. This is why I get confused. यहाँ AC नहीं रखना है. Okay.
I still have zero faith in this piece of code. Okay, let's not waste more time and check what's happening with this one. Get the analysis of this thing. I believe. Date. It's not working, so I'm going to get the analysis of this from Gemini, and let's see what it says. How close and far from actual code am I? And based on its suggestion, I will see if this is completely wrong. Then I'm going to move to tutorial. If it thinks it's possible to solve in this regards and it gives me some hints, then I'm going to use the hints given by AI to further debug this one. I have around 10 minutes left. Touch the 1 hour mark. Okay. Okay. See, problems are not currently my forte, so uh, it's great if I can at least reach 90% of the thought process. Okay, it says I'm around 50% because using binary search, sorting, and prefix sum, total sum is great. These are good, but my logic is something messed up. Okay, the zero trap. Uh-oh. On something 10 nahi. It should be into max. Let's see what happens. This thing is coming to be 0. If anything is different. Mm-mm. 14405. Okay. Okay. You wrote a custom while the best hero allows you to decide whether to go left or right based on simple condition. Cosmos is not perfectly, yeah. The hero is not great way to define if um, this can give me the minimum number of coins if choosing this hero moving ahead or back. I just
randomly. Yeah, if I, that's the reason why I did the if else thing value. And so if I'm choosing a hero that is stronger than X, then I'm wasting defense power. If I'm choosing a weaker X, then I'm wasting coins and boosting attacks. Really, you don't need to search for the best index. You know exactly where the best candidate live. Smallest hero is already strong enough. Strongest hero who is just a bit too weak. टू टाइप ऑफ कैंडिडेट्स हो सकते हैं, या तो एक्स से बड़े या तो एक्स से जस्ट छोटा. अच्छा, तो एक्स से जस्ट छोटा इज जस्ट द बैक ऑफ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड गिव्स मी एग्जैक्टली एक्स और एक्स से बड़ा, and upper bound gives me strictly x se bada. So if I get lower bound and just subtract, just go to the previous index, then I'm getting the hero that is okay, समझ गया. लोअर बाउंड से काम हो जाएगा. गॉट इट. लोअर बाउंड इनबिल्ट फंक्शन यूज करके हो जाएगा. will give me -1 करना है ना. Okay, so we can abstract this binary search code with just a simple function. ठीक है, और फिर ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा this whole thing. So auto IT, it says on my experiments it also came out कि जो this is certain कि the hero that can defeat, that is a optimal hero, is या तो same exactly what the attack needs, defense needs, और just थोड़ा सा बड़ा या just थोड़ा सा छोटा. ये 3 कैंडिडेट्स है. तो IT equals to lower bound v dot begin v dot end. You give me an, ठीक है, if IT not equals to n v dot end, that means कि हम लोग को वैसा मिला है, less than equals to x, more than equals to x. This will give me something that is more than or equals to x. Okay, it will give me something that is more than equals to x. So we can update our coin वाला जो भी thing है and this thing. और ये basically login है, तो total complexity m login हो जाएगा. That is good. ठीक है. Okay, तो what we are doing here is कि मेरे को पता है कि either x exists or something greater than x exists to attack.
So what I need to do is int val equals to what is the current x you are giving me, what is the current strength of the hero you are giving me. So AC equals to x minus val, right? इधर x है या तो x से बड़ा होगा, तो val माइनस x छोटा नहीं होगा। तो कितना कॉइन्स होगा, या तो 0 होगा या तो C। if val is more than x, या तो x होगा या तो x से बड़ा होगा। सो AC का कोई पॉइंट नहीं है, 0 पॉइंट्स लगेगा। AC में से 0 होगा। और DC will be what? DC will be this thing कि whatever y is, I have total sum minus this val. So what you're guaranteeing me is कि total sum minus val will be a number that can be equal to y, it can be more than y, less than y. If the required is y and it's something more than or same y के बराबर है, y से ज़्यादा है, then I don't need any coins. The difference is negative, I don't need any coins, but difference is positive, उतना coins लगेगा, right? और same val के लिए lower one will give me a value that is equals to x or more than x. So if a negative a difference, then basically I don't need any coin. 0 plus 0 plus I need to check the DC is what. ये अगर नेगेटिव है तो 0, एल्स जो भी अगर पॉजिटिव वैल्यूज है उतना कॉइन लगेगा। 0 प्लस DC coins equals to mean of coins comma C. Okay, this if is done, और एक if IT जो है not equals to v dot begin, क्योंकि हमको उसका जस्ट प्रीवियस लेना है, of more than equals to x is less than x. So auto IT2 that is rev of IT, okay, this is done. Now same, we can update the coins and check the value कि जो val है वो IT2 का होगा, and it's basically x will thing will be smaller than x, so it is guaranteed that x may also need some coins. x से छोटा है, required से छोटा है, तो it will need coins. So इसमें coins होगा AC equals to x, well, because it will be smaller than x and that is the number of coins I need. And इसमें क्या है कि same logic, so यहाँ AC plus DC होगा and we need to update the coins. इससे क्या होगा कि मेरा पूरा coins
Possible heroes to choose are more than equals to x or less than x. See out coins line. Let's print this thing. What is the answer? 1240. Something is wrong. Oh, we need to give the target. No matching function to call begin. Hmm. This is a new learning because I never used this. I use this one in set, but not in standard arrays and vectors. So this one is new for me. 12402. Let's see. This is the answer I needed. Yeah, 12402. Let's submit it. Total time complexity will be m into log n, which is pretty standard. Uh, Wrong answer or test 5. What is this test 5 doing? I think it's a precision problem. How many digits are there? Nineteen digits. Okay.
10 to the power 18 or 19. I have to use unsigned long. What is the range of unsigned long? Let me see. Unsigned long has a range of 10 to the power 32. 2 to the power 32, right? That's number 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Yeah. I think that's the thing that's stopping. प्रिसीजन का ही प्रॉब्लम था. फिर से सबमिट करके देखते हैं. I think the problem did run correctly, right? Not good. If something is giving 10 to the power 18, then what we need to do? 0, right? I think everything should not be unsigned long, but just the thing that is holding coins should be. One 2 4 0 1. 1 hour 15 minutes. I think it's pretty much done. These things have sort of thought given to it. Great. I choose the code again.
submit. Let's see what happens. Get stuck on test 5. What is wrong? Then this check is not necessary. Then this check is not necessary. Again, I'm going to submit it. I removed the check where it says if coins equals to infinity, then print 0. This is not part of the original plan. Okay, why is not working here? Let me check. Oh, okay. Okay. So my infinity was not that good. Okay. Okay. The int was not big enough. That's the problem, right? So unsigned int won't help. Okay. Unsigned int won't help. Just increase the stuff.
Great. Submit it. Great, it got accepted. So I'll say this was one which I solved with hints. Let's see how the top coders did their version. And how could have I um, avoided this confusion which I had. Upper bound and lower bound. Okay. Okay. Oh, very similar. Okay. Great. I'm taking a short break. I will return in 10 minutes.
I'm back. Let's move to the next problems. Let's see how long this headphone holds. इनपुट लिया, सॉर्ट किया, सम लिया, आंसर x प्लस वाई होगा. लोअर बाउंड यूज करना है. इन चीजें so I needed to know that कि possible है at least. ठीक है. Okay, great. Let's move to the next problem. I can do it. Is my screen shared? Yeah, it is. Okay, great. Solve this. We have the timer started. The 30-minute timer has started. Okay. Let's do it. You have a positive integer m and a non-negative integer s. Non-negative integer s, positive integer m, both are same, I believe. Non-negative, that means it can be 0, right? Okay. 0 positive? No, I think s includes 0. The task, okay, to find the smallest and the largest number that have length m and sum of digit s. Length m and sum of digit s. Length m and sum of digit s. Find the smallest and the largest number that smallest and largest जिसका length m हो और sum digit s हो. This requires the required number should be non-negative integer written in the decimal base without leading zeros. Leading zeros नहीं होना चाहिए. Okay.
सो m जो है 100 लेंथ तक नंबर्स मांगा जा सकता है एंड सम 900 हो सकता है. ओके. In the output, print the pair of required non-negative integers. First the minimum possible, then the maximum possible. No numbers satisfy the condition, then -1 print करना है. Okay. तो what does this say? सबसे पहले तो to have a target equals to something 900, जैसे 2 और 15 है, लेंथ 2 होना चाहिए, सम होना चाहिए 15. तो डिजिट्स में I think this is presumably DP. This is presumably DP क्योंकि मूव करना है and you have to reduce the target while minimizing the value, right? Okay. तो हम क्या कर सकते हैं? Sum of digits s. The number should be non-negative integers written in the this. 0 नहीं होना चाहिए. तो what we can do is m तक iterate करना होगा, m length तक या whatever, and we have to try to finish s by so what we can do is कि m change हो रहा है and s change हो रहा है, तो this will be a 2D DP where m changes and s changes. Moving ahead and reducing m and reducing s, right? What will be the base case? Digits sum store होगा. $900 into 100 हो सकता है. वही 2 into 15. तो 2 into 15 करेंगे, ऐसा होगा. तो it says what if the length is 1, length is 2. So surely we will want this dp of 2 and 15. मैं 2 - 1 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर एक ज़्यादा बना दें और इधर ज़्यादा बना दें तो ये 0 0 0 0 रख सकते हैं, ये 0 0 रख सकते हैं. यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना, वन बेस्ड इंडेक्सिंग. तो अगर 2 और 15 लेंगे, सो ईच ब्लॉक विल आंसर की अगर लेंथ 1 होता और सम
प्री डिफाइंड है। व्हाट आर द पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो एक मिन अपडेट करेंगे, मैक्स अपडेट करेंगे और नंबर्स का, क्योंकि हर डिजिट के लिए इंटू 10 हो रहा है ना, तो 10 प्लस दैट थिंग। तो अगर एक मेमोराइजेशन लिखें एंड आई गिव देम द लेंथ, ओके, आई गिव देम द m and s, that is sum. So we'll start from backwards, great, and we'll try to keep the number as small and as large as possible, right? Okay, वो अपने आप होते जाएगा, सारा कॉम्बिनेशन ट्राई हो जाएगा। सो इफ इंडेक्स खत्म हो जाता है, m is equal to 0, that means कि नंबर फुल्ली फॉर्म नहीं हुआ है। रिटर्न नंबर फुल्ली फॉर्म नहीं हुआ है तो -1 रिटर्न कर सकते हैं। इफ s इक्वल्स टू 0 हो गया, सम 0 हो गया, एंड तो देखो, तो s 0 हो गया, m भी 0 हो गया है, तब रिटर्न करो वो जो नंबर है -1। ठीक है, बेस केस ठीक करेंगे। नाउ वी वांट टू डू इज व्हाट, वो एक डिजिट पास करेगा, जस्ट इट विल पास अ डिजिट। m खत्म हो गया, s भी 0 है, तो रिटर्न 0। ठीक है, एल्स अगर m खत्म हो गया तो रिटर्न -1। ये s खत्म नहीं हुआ, ये s खत्म हो गया है, और कर देते हैं तो हो जाएगा। नाउ हर नेक्स्ट एक डिजिट रिटर्न करेगा जो कि आगे जाके ऐड होगा। d इक्वल्स टू (999) रिटर्न कर सकते हैं, 000 हो जाएगा, बट कीपिंग 99 इनिशियली इज गुड थिंग ना, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा।
एंड छोटा नंबर होगा 1 रखो, फिर 0 0 जितना रख सको। शुरू से बनाना इज बेटर। तो एम तो खत्म होगा ना धीरे धीरे, बट हम लोग पीछे से आगे मूव कर रहे हैं, है ना। तो पहले क्या कर सकते हैं, एक भेज सकते हैं 9 के साथ, ठीक है। मैक्स इक्वल्स टू अगर पॉसिबल नहीं है तो इसमें एक पोजीशन कम हो गया और s-9 कर सकते हैं। एंड सम इक्वल्स टू इफ गिवन सम इज मोर देन या इक्वल टू 9, ठीक है। तो क्या करेंगे कि s-9 कर देंगे, एल्स एल्स 0 कर देंगे। ये 9 हटा के जितना सम बच रहा वो है। तो ये सम भेज देंगे आगे। तो व्हाट विल हैपन इज कि जो डिजिट है आगे गया 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 खत्म होगा। एंड min इक्वल्स टू, भूल गया डीपी कैसे करना है, कि स्टेप एक लेंथ तो कम जाएगा, बट आई वांट टू सब्ट्रैक्ट जस्ट या तो 1 या तो 0, ठीक है। वन 0 0 0 नहीं कर सकते, तो
कैसे करना है कि जैसे आई हैव दिस 15, हम स्टार्ट करेंगे 15 माइनस 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिजिट होगा इन x इंटू 10 प्लस ये जो भी रिटर्न करेगा 9 1 2 3 इंटू 10 प्लस ये जो भी रिटर्न करेगा, और इन रिटर्न max of मैक्स स्टोर करेगा, मिन स्टोर करेगा। इम्पॉसिबल कब होगा? जब सम ज़ीरो करने बोले, या नेगेटिव सम तो बोलेगा नहीं, बट लीडिंग ज़ीरो, बिना लीडिंग ज़ीरो इसका सम ज़ीरो नहीं हो सकता। और सम बोले कुछ 9 इंटू 3 से बड़ा नहीं पॉसिबल है, और 1 0 0 इससे छोटा नहीं पॉसिबल है। सम कम से कम 1 होगा मिन, और मैक्स सम पॉसिबल है 27। m इंटू 9 और 1। इस केस में -1 रिटर्न कर देना काफ़ी है। ग्रीडीली अगर बनाए तो हो जाएगा, 9 लेंगे, फिर नेक्स्ट जो बचा 6 लेंगे, फिर बाद में 0 0 0 डाल सकते हैं, जितना भी 0 डालना है, गुड नंबर, और 1 लेंगे, ज़ीरो 0 0 डाल रहे हैं, लास्ट में 1 1 1 के लास्ट में 9 कर दिए, सही रहेगा। बिना डीपी का भी किया जा सकता है क्रिएटिवली, मतलब थोड़ा ग्रीडीली अगर करे तो use all the 9s at first, and whatever left, then you can just spread out the zeros if length is required. And for or you say the smallest number, what you can do is like you can try 1, but you have to see कि जो remaining जगह है that can accommodate at least the remaining. So 15 minus 1 is 14, remaining is 1. 1 cannot hold 14, at least I need 9 and position 9 5. So whatever the extra is, लास्ट डिजिट 9 रखेगा, ठीक है, लास्ट डिजिट 9 रखेगा, उसके पहले तक 1 1 1 ऐड कर सकते हैं, एंड फर्स्ट में 1 रहेगा एंड बहुत सारे ज़ीरोज़ रहेंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज, टोटल सम है 15, देन आई नीड टू स्प्रेड आउट 15, तो पहले 9 लेंगे, उसके बाद बचा 6, जितने भी जगह हैं उसमें से 1 2 3 4 5
6। तो यहाँ पे 5 रहेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा। If remaining length is more than equal to, जैसे 6 है, 15 minus 9, then what we can do is कि 9 के पहले हम लोग 4 zeros रैम -1 1s लगा सकते हैं, फिर जितना भी zeros रिक्वायर्ड है वो लगा सकते हैं, और फिर एक 1 लगा सकते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर। और 999 लगा सकते हैं। मान लो कि ख़त्म हो गया, अब पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे zeros लगाना और एंड में जो नंबर बचा वो लगा देना है। नहीं, ये लगा देना है, फिर 0 0 0 करना है। इसको बिल्ड करने के लिए 9 रखना है, देखना है कि एरे में कितना बचा हुआ इंडेक्स, ज़्यादा है तो 4 यहाँ रखना है, टॉप में 1 रखना है, बाकी सब 0 ही रहेगा। Okay, let's try the greedy method first. If that doesn't work, then देखते हैं। So we're given 2 inputs, M और S दिया रहेगा। M और S, ठीक है। Now what we can do is वेक्टर बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। वेक्टर विल बी ए गुड चॉइस। इसका एक का नाम होगा मिनिमम और एक का नाम मैक्सिमम होगा। बोथ विल बी ऑफ लेंथ m, okay। Now what we can do is let's create the maximum for int I equals to 0, ठीक है। आइटरेट करेंगे, 9 प्लेस करेंगे, टारगेट इक्वल्स टू s, 9 प्लेस करना है। If s is more than twice of m into 9 or s is less than 0, equal to less than 0 नहीं, less than 1 होना चाहिए, कम से कम तो 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो मैक्सिमम बना रहे हैं ना, मैक्सिमम का i 9 रखेंगे और if tg is maximum I
equals to tg minus ये तो मैक्सिमम नंबर कंस्ट्रक्ट हो गया। नाउ मिनिमम नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। मिनिमम नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए यू कैन मूव फ्रॉम द बैक। ओके, यू कैन प्लेस 1 9। अरे टोटल 9 ही हुआ, तो अभी 0 नहीं रख सकते, फर्स्ट में 1 रखना ही होगा। मिनिमम का जो पहला है 1 रखेंगे, वो भी ज़रूरी नहीं, तो पीछे से देखना होगा 9 रख सकते हैं अभी कि नहीं। और int I equals to 0, I less than ठीक है, पीछे से मूव कर रहे हैं। एंड लेट्स सी इफ वी कैन प्लेस तो इसका एक डायरेक्ट मेथड हो सकता है। इफ वी हैव रिमेनिंग पोजीशन करंट को छोड़ के, int rem equals to, जैसे कि I'm at I, so I think I represents the remaining positions. I represents the remaining positions. And yeah, तो remaining positions में इसका 30 मिनट्स हो चुका है ना। अगेन स्टार्टिंग इन 30 मिनट्स टाइमर, ये देखते हैं 10 मिनट्स के अंदर ये हो जाए। गुड, नहीं तो फिर आई नीड टू सी द रिलेशन। रिमेनिंग जो है कम से कम 1 चाहिए। मिनिमम what you want is 1, and टारगेट को रिस्टोर करते हैं। तो if target is more than 9, more than 9 है तो रख ही सकते हैं, है ना। एट है तो हाफ होना होगा, है ना। कम से कम वहाँ 1 होगा, and in certain cases there can be numbers left. So again जैसे 9 है exactly, and आगे का number we are giving is 0,
but it's not possible. So वन बचा होना चाहिए, अगर जब वन बजेगा तो फिनिश करेंगे। लास्ट में आई नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स खत्म नहीं हुआ है। आई खत्म नहीं हुआ एंड आई खत्म नहीं हुआ है, टारगेट को कम से कम मोर देन 0 रखना है। मोर देन 0। नाइन है तो रख देंगे। सम हो सकता है 10, 9, 8, 2 डिजिट है। अगर 10 है तो ऑब्वियसली एक 9 रखेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 9 रखेंगे तो यहाँ 0 रखना पड़ सकता है, और यहाँ 8 रखेंगे तो यहाँ 0 रखना पड़ सकता है। प्रॉब्लम हो रहा है जब जो भी टारगेट है इज इक्वल टू और लेस देन 9, ठीक है। अगर टारगेट इज इक्वल टू और लेस देन 9 less than equal to more than equal to less than equal to 9, तब क्या करना है कि एक बचा लेना है। करंट पोजीशन में मान लेते हैं ये 3 है, तो फर्स्ट के लिए एक छोड़ना है, एक बचा है ना इसमें। इनका इस पोजीशन में TG -1 रखना है, एक बच जाएगा, एंड TG माइनस ये होगा। क्योंकि टारगेट जो भी था एल्स टारगेट बड़ा है 9 से, इस 9 रखते जाना है।
ये भी टीजी बचेगा, 1 बचेगा तो 1। मैक्स please work, please work. गलत हो गया, मिन मैक्स नहीं, आई नीड टू। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लार्ज जो है इंटू 10, ठीक है, एल प्लस इक्वल्स टू मैक्स आई वेरी स्मॉल इंटू इक्वल्स टू 10 स्मॉल प्लस इक्वल्स टू 10 आई। It's taking so much time. अरे यार, एस रीडिक्लेयर हो रहा है। स्मॉल लार्ज लार्ज स्मॉल स्लो है यार, it's taking so much time. पहला वाला था 1 आवर 15 तो हो ही गया था, 1 hour 30 minutes. Okay, this works. Next. लेंथ अगर 20 कर दे तो
96 बहुत सारा 0 एंड 1 रहेगा 0059 हो जाएगा देखना स्ट्रिंग करना स्ट्रिंग स्ट्रिंग इससे छोटा नंबर नहीं बन सकता दिस इज डन ठीक है 3 and 27 करते हैं देखो 999 होगा दूसरा भी 999 ही होगा एक 100 होगा एक 100 होगा तो 29 करके देखेगी
-1 होना चाहिए क्योंकि नॉट पॉसिबल। That's 0 डेफिनेटली कम कर जाएगा। ओके, आई थिंक आई हैव टेस्टेड इट इनफ। सबमिट करके देखते हैं। काम कर जा, please work. Wrong answer on test 8. That is a very दूर का टेस्ट। अच्छा 1-0। Answer is 1. Answer 1 and you are getting trying to लेंथ 1 है। लेंथ 1 है ना। एक 0 तो डाल सकते हैं, 2 0 नहीं लगेगा। बोल रहा है कि सम अगर 0 तो 3 0 देना होगा ना। S is less than equal to some 0 है and
एज केस है 0 के लिए काम करना चाहिए. Three zero. Almost 1 घंटा. देखते हैं अपडेट किए कोड if this works. Accepted. Oh, that was a easy one. I could do it in 55 minutes. Same thing. Okay, this one is also done. Okay, registration system. There's a lot of time. We can काफी time है. Can solve this in the next one too. Let's do it. 2 done so far. Let's do this. Let's start the timer. 30 minutes in. Okay. Registration system. Okay. A new email service. New email service Poland desk is going. Okay, you don't need to read the story. Input is 10^5. The following lines contain the request to the system. Each request is a non-empty line and consists of not more than 32 characters. Lowercase Latin letters. Okay, 32 length होना चाहिए and 10 to the power 5. Basically इतना lines contains the request on the system. तो वो काफ़ी lines है, lines of request. Okay. इतना लाइन्स ऑफ रिक्वेस्ट है सिस्टम के लिए और ईच लाइन 32 लेंथ का हो सकता है. पुट प्रिंट n लाइन्स विच आर सिस्टम रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट. तो सिस्टम रिस्पॉन्स होना चाहिए प्रिंट रिस्पॉन्स. ओके, प्रिंट रिस्पॉन्स सिस्टम रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट. Okay, in case of successful registration or a prompt with a new name,
Request named is already taken. Okay. Request okay हो सकता है, capital O capital K. Give a successful registration or a prompt with a new name. The request name is already taken. Okay. 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 New name. ओके तो ये स्ट्रिंग मैचिंग है, बट इतने सारे स्ट्रिंग्स को एफिशिएंटली मैच करना आना चाहिए. दिस ट्राइज यूजर नेम मैचिंग है, तो ये ट्राइज है आई बिलीव. ब्लूम फिल्टर एंड those kind of things. What we can do is you're not getting try in problems here, right? So just इतने सारे हैं, मैच करना is big of n, so we cannot do equals to n log n में ज़रूर कर सकते हैं, but time limit is 5 seconds. That means काफ़ी time. That means 10 to the power 8. 5 is बेसिकली n log n में करना है, तो 10 to the power 5. What we can do is स्क्वायर नहीं कर सकते. पहले हम लोग एक यूज़र नेम लेंगे एंड उसको हम लोग ये ट्राई से ही होगा. तो ये बना सकते हैं लेफ्ट और राइट में, छोटा है तो, एंड वी कैन ट्रावर्स इट एंड फिर मैचेस पूरा completely मैच अगर कर जाता है तो फिर can just add random.
Okay, I have no clue what to do on this. एक number को लेंगे and just you can save it in what do you say? You can match it, but एक match will take me 32 operations and possible है. Just we can match क्योंकि 5000 is the limit. मान लो तो बहुत सारा यूनिक नेम हो गया तो उसको कैसे वो करेंगे. ABCD तो होगा ही. I'm thinking it's tries. Let's see category क्या है इसका. But why will I get a tries question and problem C? देखते हैं. Try prefix tree जिसको बोलते हैं is a tree where every node represents a character. Root is empty. You store cat, you go C, you go A. You mark the node at T as equals to signify a word finishes there, right? First time implementing try. फिर ये होगा try. Oh shit यार, ये तो काफी बड़ा है. So these needs to be, I think, pasted. This thing needs to be pasted, I think. Try it. What implementation है? Insert
I am sure this is a try question. Let me create this shortcut. I will need this try. Let's see if we can learn about try today. This will be quite interesting. Let's create the snippet where I will save the try data structure here. Okay. Try dot sublime NIPPT. Let's see if this works. Okay, we have try here. Let's see if we can fix this. Okay, now what we need to do is we have our try. Then we have this problem. We have n and all those ABCD, whatever. So int n, cn, and the words, right? Then
int n. Okay, as an n, then now what we can do is first we try to search if the word is not present, then it's good, right? First we need to create a try for all these words. Okay, we have a try now. Now what you need to do is first search try dot search s. If found, क्या करना कि मॉडिफाई करके इंसर्ट कर देना. If found, see out सेम वर्ड को नंबर ऐड कर सकते हैं या क्या ऐड कर सकते हैं. string string मतलब s है plus equals to 1. see out s else see out नहीं insert भी करना है तो try dot insert s और अगर मिल गया let me see if this works. This is similar to username search. They use advanced version of tries, but try also works.
is equals to what dot length. ठीक है. One बढ़ते जाएगा, so that's not a problem. So, oh, is this done? 3 minutes left. But you know, this fry thing is a black box to me, right? Because I never use this. I just knew कि कहाँ use हो सकता है. It's kind of black box to me. I don't know how to implement it still, but I know its use cases. So I think that's kind of win. Let's submit and see. या एक दूसरा है वो भी टेस्ट कर लेते हैं. Okay, first. Great. सबमिट करके देखते हैं. Maybe basic try है इसीलिए 1300. I don't know. Try is an advanced data structure, but maybe. Wrong answer on test 5. Wrong answer on test 5. Okay, out of bounds. Error. It's giving me out of bound. What is the question?
Okay. Third answer is single words. Just give me an error. Index 48 out of bound. Node 26. Is this something? Almost done. 3:30. It's almost done. This thing minus a not equals to null. So okay, let's see. Okay. Uh, let's test this first. Let me get the where is the अरे यार ये नहीं है that eighth test case is talking about this one. Okay. Okay. The AI says this is overkill. But
inserting numbers. ये और अगर सिर्फ टेक्स्ट होता तो that could have been a different thing. इसका अगर साइज इंक्रीज कर दिया जाए and all ASCII characters संभाल ले, what do you think? This will be a great tool. This works without problem, but will this give me Emily? 256 into 4. Most probably these are links. Node star. This node size is currently 0. Mostly functions. So it's not understanding my logic. दो बार B1 नहीं कर सकता, राइट? B2 होना चाहिए यहाँ पे. तो बार बार 1 ही यूज कर रहे हैं ना. अगर फाउंड है, ठीक है, इसमें और 1 यूज कर सकता है ना. वही हुआ फर्स्ट टाइम B मिला.
नेक्स्ट टाइम उसमें 1 ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। वन वन हो जाना चाहिए, but it's not happening. That means so try was an overkill, so I need to rethink, right? तो मैं अपने सेव कर सकता हूँ, सेम चीज़ अगर मिले तो उसका बस काउंट बढ़ाना है। दिस इज बेसिकली की एस मिला, फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, एक बार भी नहीं आया है। उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है देन पहली बार है तो ओके करना है। और अगर पहली बार नहीं है तो
एक बार आया नहीं। जैसे मान ले फ्रीक्वेंसी 1 है, एक बार आ चुका है तो 1 तो लगाना होगा, है ना? तो टू स्ट्रिंग पॉसिबल है। I do overcomplicate things. That's a really bad habit, I believe. ठीक है, ये सबमिट करके देखते हैं। Yeah, accepted. This one too, I needed a hint. So what, I did this in maybe 45 minutes. Okay. And that's it for today. Yeah, I did 2 1400 and 1 1300. That's a good jump. I feel pretty, you know, um, what, burnt, or what I say, worked up, because these problems were not that hard but required a somewhat different level of cognition compared to the problems that I used to solve previously. Not that difficult. It's solvable. I can say 20% bump in difficulty. That's not too much. So yeah, it was a good solving.
today. 3 problems solved. The last one, the 1600 rated one, I don't think I will be able to solve it in what I say is full potential. So I think that's a win. So I will update the Codeforces logs later this evening. And as today goes, the first one, which I needed hint, took about 90 minutes. Second one, I could do it without hint, 55 minutes. And the third one, which I overcomplicated by thinking of using tries, took me around 45 minutes after seeing the hint. So, okay, not bad, but okay, good progress. Okay, see you in the next one.